And this city is known for spin-offs. There's something in the air. A lot of the times our university president and government officials, they call it that there's something in the water of Waterloo. And the reason is that's why everybody has some sort of a business, some sort of a spin-off from the university. I also have two. Yes, sir. Yes. Oh, who's that? There was an enthusiastic participant. So I'm sorry, I can't see you all. Just give me a second. Let me just change the view here so that I can have a gallery view so that I can see more people. All right, so there's something in the air or in the water of Waterloo, and the ecosystem actually enables us to go and venture out, develop our ideas further, commercialize our ideas, and spin it out in the market and see how the market reacts to it. So Spotify, all these big companies, OpenText, BlackBerry, they were all started by University of Waterloo alumni. So we have that thing. Other than that, there's a very contrasting story to Waterloo. So you can hear about this Google, you can hear about all these big tech organizations coming and making their footprints here. But at the same time, this city houses a lot of Mennonite community. I don't know if you know this. Mennonites are the ones who still travel on buggies. They don't use cars. They don't use electricity. So if I go to Walmart to buy groceries, so there will be a Tesla parking lot where you can just charge your vehicle there. And right next to it, there would be a place where you can park your cart with a horse in it. So it's a very contrasting place. And that's the strength of this area. uh, we have been coexisting, people respect that, and everybody enjoys that kind of culture. And I think that has something to do with the drive and innovation. And because people pretty much they exercise empathy here, and they just want to take care of others, and that's ingrained in the culture of our city. And this city is unique in a way. It's very different from Toronto. So for example, when I'm driving on the road, people are relaxed, nobody's honking anyone. And I hate driving when I go to Toronto downtown. I just hate going there. And that's not just me. In fact, a lot of people do that because there's a lot of calm and composure in this city. Now, why am I telling you all this? I think it has a link with how important certain stakeholders are in our lives. So it's all business driven. You can pretty much run a very high tech organization. But at the same time, there are other stakeholders that are kind of contributing towards your innovative network. So that's where I'm going to just speak to you and talk about some of the theories that are being in play and some of the concepts that come in handy when you're starting your business. All right. Any questions so far? Any comments so far? No? Okay. So I'm going to start now giving you some background on stakeholder theory. That's an area in which I do research and I do a lot of field work. Then I'm going to just transition that talk into another topic, which is business ethics. How many of you have taken courses related to business ethics in your? I know that you are all business students at IBA. Have you taken any courses in business ethics lately or no? You can just write in the chat and I can take a look at it. No, sir. No? Okay. All right. So then I have something new to talk to you. And then I will just transition that into stakeholder management in Pakistan. And then I'll open the floor for you to just give me your examples and some of the ideas. And we'll see whether the stakeholder theory holds its ground in cultures like Pakistan or in countries like Pakistan. And how that contrasts with organizations operating in North America, for example, where I'm sitting. And lastly, I'm going to end the discussion by talking about, so what? Why are we doing all this? So what benefits can come out of this? So that would be the structure of my organization or my talk. Please feel free to stop me at any point where something doesn't make any sense. All right, so in addition to what I just explained about University of Waterloo or the Waterloo City, I just want to talk a little bit about the ecosystem, the entrepreneurial ecosystem here. So we have quite a bit of push from the government, and we are kind of lucky there.
There are certain centers which are run by the government called Communitech Hub. So it's a big building in our city where anybody who has an idea can just go to, and they could be housed. There's a process obviously, but you can just get the office space, and you can get a few reliable computer spaces or some stations to work at, and there would be some mentors who can help you with that specific industry, so that you can commercialize your business. And that's been proving extremely helpful. One of our students, I think he sold his company to Google for a six-figure, or I think seven-figure, digit, and or amount, and that was like a big deal. One of another alumni recently sold another company to, I think, Microsoft, and that was again a huge success story. Then we have a very exciting, or a very different kind of a setup at university. It's called Problem Lab. So the purpose of that lab is that you cannot just go on and work on anything that you find interesting. It's not going to help much of the world anyway. So what they do is they just specifically focus on some big problems in the world, or big opportunities in the world, and they run their analyses, and they present these analyses to anyone at the university. You can just go and join in, and they give you all the literature, all the background, all the research, and basically they just tell you, here's an industry which is untapped. Go and do some work there, and we can give you some seed money. We can give you, let's say, $10,000, $15,000 to just begin with, and go and run with it. So that's also adding a lot of good stuff there. I see a raised hand. Jerry, do you have a question? Yeah, I do have a question, like something I want you to speak about, like it's something regarding entrepreneurship. So after COVID, like most of the people and majority of the people have shifted to remote works, and there's a trend that's going on. So what do you have to say about the job security and this entrepreneurship element? जहाँ पे मतलब people are liking this concept, like work from home is something new for many of the people after the COVID hits us. तो उस बारे में सर आप क्या कहेंगे कि like people don't shift towards entrepreneurship due to the job security, like they are afraid of the uncertainty, they're afraid of the security and everything about their bills. So what do you have to say about it? So if you would like to say something. Absolutely. I think that's a very important point, especially we are all living in this COVID times, and it's been almost a year now. I will certainly come to that. And I think this is an important issue. Maybe in a few slides, when I'm looking at my notes, I'll just come to that. So at this point, what I want to just maybe introduce is the stakeholder theory. And partly I would try to address this question by discussing about stakeholder theory. So what is stakeholder theory? Stakeholder theory was coined back in 1980s, so by a guy named Ed Freeman. And his idea was that traditionally organizations been just focused on shareholder interest. So what they do is they just try and appease their shareholders who have only money interest in the companies, and they try to just answer to them, try to help them out, manipulate the money figures to increase the wealth, increase the value of their organization. And according to people like Jensen, who was a professor at Harvard, like Michael Porter and others, there's a huge list of such people, Milton Friedman, they've all been just saying the same thing, that the fiduciary duty of any organization is to create value for its shareholders only. So the board and whatever board that you just constitute in your organization, it should only work for your shareholders. Now, Ed Freeman in 1980s, being an ethicist or being a philosopher, he joined a business school, and he says there's something wrong here. There's something wrong with this narrative. So he came up with an idea of stakeholder theory. And stakeholder theory actually suggests that in order to succeed, in order to start a business and create more value, the fiduciary duty of any organization is to create value for all stakeholders without trade offs. It should not be just focused on shareholders. It should not be just focused on employees. It should be equally focused on, or at least you should find a way to harmonize your interest with your employees, with your customers, with your suppliers, with your communities, with the environment.
with people with the money, so with financiers as well. So financiers are not, we're not discounting that. All we're saying is that stakeholders are important, and when you start doing some trade-offs with them, that's when the problem starts. Now with this idea, let me just stay with this idea for a second, and let me just try and connect it with COVID-19 situation. Let me give you an example. Airline industry. I think that has suffered. I've given this example before in my previous talks as well, and I can give you so many others too. But this is a very good example for you to understand that what actually organizations do here. So airline industry in the last 4 or 5 years been doing amazing. Like in North America, they were making good money. There was a lot of traveling happening. They were expanding. More fuel efficient planes were being rolled in. So their fuel costs were all going down. So their profitability was kind of increasing. Now, during that time, they kept on buying back their own stocks. So what happens when you do that? Basically it increases the valuation of your company. So if you go on publicly funded, like public IPO area, and you look at the wealth, you can find out, oh, from 7 billion now it's been raised to 700 billion, now it's been raised to 900 billion. It's very close to touching 1 trillion mark, which just a few companies have done it so far. I think Apple is there, Google is there, Microsoft is there. Apple, I think, is even 2 trillion. So very few companies get to do that. So when you go to that area, when you keep on buying back your own stock, you're just increasing the valuation of your company. Now came the time when COVID hit. That was the industry that was adversely affected by all this. What were they doing? Because they didn't have any extra cash. They had already bought their own stocks, and the stock prices plummeted 50%. And so if they were operating at 900 billion, now they're at 450 billion. Now that's a really concerning situation for the company. What do they do? It's a big establishment. They just go and try to find a bail package from the government then. That's what big banks do in North America. That's what all these airline industries have been doing. Now, all the government then had to intervene because this is a huge establishment, and they know that a lot of people are working there. Thousands and thousands of people are working there. So if we just let go of this industry, these people are going to turn against us and they're going to vote us out. So all of this starts happening, and it has a trickle down effect. Now, versus think about the organizations that had a good time, they made good money, and they started investing in various different stakeholders. So they started helping the communities. They started aligning themselves with their employees. They started aligning themselves with their students, for example. One example that I really like giving is University of Waterloo. So University of Waterloo started investing in online education 30 years ago, not just now. So doing all this online is nothing new to me. I've been doing it for last 8 years. And I've been doing, I teach to executive students. So one of my classes that I teach in my yearly contract at University of Waterloo is I have to teach an executive business class, and that's on strategic management. And my students are director level, sometimes CEOs, sometimes senior managers in some big corporations or big companies, and they just take my course. And I've been doing that online for last 8 years. So this is nothing new to us. So when the time came when we had to port the whole university online, we did it like this. Now I'm telling you what's the upside of it. We didn't lose our enrollments. We didn't lose. In fact, we gained some good reputation because, for example, in my department, I was helping my colleagues who never taught online because I had vast experience of interacting with students online, and I had all the tricks and everything that I knew off my sleeve, which I could just pull and start implementing that. And that was a success thing. And I knew the psyche of my consumers, I would say, or students, that how they actually can learn better. For example, just right now, I decided not to show you my slides. Why? Because I wanted you to be engaged with me. And that's exactly what organizations or people who have experience, they started doing in different companies. Now, let me give you another example of restaurant industry, very badly affected industry. Now, in Waterloo City,
There's a Pakistani restaurant, and I know the owner. He was an engineering student. He dropped out, and honestly, he built an empire out of it. He has like now 5 restaurants operating in the whole of Toronto region, Mississauga, Milton, and now Waterloo. So he's doing very well. He's a friend. And I spoke with him at the beginning of this pandemic that what's going on? You guys are open. Why haven't you closed? And he was angry. He was like, buddy, I'm doing a business here. So how can people just, my family is against me, but I'm going to keep it open. And he was a very technologically sound guy. So he had already invested in building a good online presence. He already had a good network, uh, delivery network. There was trust. He was never, delivering things late. So what happened? He took most of the market share. When everybody was down, when everybody closed up, he was the one who was open. And then he actually started operating till 3 a.m. every night. And in Waterloo, the culture is after 10 p.m., all these restaurants are closed. Nobody opens up. It's not like Pakistan. It's not. So here, after 10 p.m., you're hardly going to find any food. Maybe some pizza joints. But all these restaurants, they closed, and he started operating till 3 a.m. So he added another 5, 6 hours, and on weekends till 4 a.m. So the point I'm trying to make here is that if you have invested in various different stakeholders at the right time, chances are you're going to sustain. Chances are you're going to do a better business than your competitors. So there are basically 3 tenets of stakeholder theory. Now I'm going to just very quickly go over those. One is jointness of interest. When you're starting any business, try and look for opportunities that are out there in the communities. And when you find those opportunities, try and align your interest with the interest of that opportunity or that stakeholder. Try to help them, create value for them. Obviously, you're going to have to make money, so be mindful of that. I'm not just saying just go and give them everything for free. No, not at all. All I'm saying is that when you start serving those communities fairly, chances are they're going to reciprocate. And there's tons of research. Journals are all, we can find really good research in Journal of Business Ethics and top tier journals about this, that there's a reciprocity that happens. Reciprocal experience. Just think about your own interactions with your own friends, your family. If there's reciprocity, you do well, right? So you try and go out and help that person during difficult times, if that person was also with you. So it's the same way, if you're a business, if there's any stakeholder that was trying to help you during your difficult times, chances are you're going to go and help that out when something goes wrong. So I can see 2 raised hands. Please go ahead. Please open your mic, and maybe with Sam, you can go first. Yes, sir. So this is Wissam. I wanted to ask about what are the elements that are different from human beings for stakeholders? Like, does the environment count? I just want to see if this theory works for sustainability as well. Oh, absolutely. Good question. So I haven't honestly come to that definition of stakeholder. That's a good question. Stakeholder, how does Ed Freeman describe a stakeholder? Any organization or any individual who can affect or is affected by the achievement of an organization's objective is a stakeholder. It could be your environment, it could be your supplier, it could be police enforcement agencies, it could be your government, it could be NGOs, it could be trade associations, it could be your customers, of course. So anything or any individual or any organization that can affect you or you can affect them becomes your stakeholder. Now, sky is the limit. You can just very well think about all the different stakeholders that can affect you or be affected by you. But here's a catch. Now, your next question should be, your follow-up question should be, so is it best if I go and just canvas like 200 stakeholders or 300 stakeholders or 50 stakeholders and try and aligning my interest for them? That would be very difficult and hard thing to do. So the answer that I got from the guy himself, Ed Freeman, on this very question was, how many of you play music or understand music? You can then really relate with this. So when you're playing guitar or when you're playing any instrument,
It's not about how many notes you play, it's about which notes you play, right? So when you're doing an intro, when you're doing an interlude, when you're doing an outro, you actually try and just manipulate or just play around with certain tools, certain notes. You don't want to go just crazy about things. So the same way, you can think about stakeholders. You're going to pick up or pick some of the stakeholders that you really think are extremely important for you at the beginning. And then you really align your interests with them, try and offer more and more value. And essentially, when organizations grow, more stakeholders will add to that. And when more stakeholders add to it, try and align your interests with more and more stakeholders. Environment is a really big stakeholder these days. In fact, it has come to a point where all organizations are focused on bringing sustainability in their. There's a concept of circular economy now, which makes a lot of sense to a lot of organizations. So stakeholder theory is at the core of it. That try and look for aligning your interests with various different stakeholders, and it shouldn't be just a few of them. So I hope this answers your question, Wissam. All right. Now, Atik, you had your hand raised. So can you hear me? I can hear you fine. Sir, my question is, as you talked about कि जैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस टाइम के साथ चेंज हो गया है, अब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लोग आ गए हैं, तो इन अ सिमिलर वे आप ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और इसको आप फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं? शुड वी इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, मतलब क्रिप्टो करेंसी, कंसिडरिंग द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड हाउ मेनी पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, अगर वो कोई मतलब अपनी जो ऑनलाइन करेंसी अगर वो करते हैं इंट्रोड्यूस, तो इट इज 100% के काफी ज्यादा लोग उसको यूज करेंगे. हाउ डू यू सी इट? आई थिंक ऑनेस्टली क्रिप्टो करेंसी वगैरह बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा है पिछले कुछ 4-5 साल से, तो बहुत हाइप इसने पकड़ी हुई है. मेरे बहुत दोस्तों ने इन्वेस्ट किए, मैंने कभी नहीं किया. और मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं है इसकी. और किसी चीज़ की मुझे समझ ना हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं से दूर ही रहूँ, या एटलीस्ट मैं अपनी, और मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं था. मुझे जो एक चीज़ लगती है कि देखिए, ये मार्केट फोर्सेस होती हैं. अगर मार्केट उस लेवल पे पहुंच जाएगी, जब स्टेक होल्डर्स खुद डिमांड करने लग जाएंगे कि हमें अब ट्रांजैक्शंस के लिए ये करेंसीज चाहिए. मुझे कुछ, मैंने पढ़ा था कहीं, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे, कुछ जर्नल, और कुछ मेरे लोगों से इंटरेक्शन भी हुई थी कि कुछ मेजर बैंक्स करना चाह रहे हैं इस चीज को यूटिलाइज. लेकिन मेरा इस पे एक कंसर्न जो एक बड़ा था, आई डोंट नो मुझे यहाँ पे रेज करना चाहिए कि नहीं, शायद मेरी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें. वो ये था कि यार, अगर एक ऐसी करेंसी हो जिसको एक बहुत टेक्निकल बंदे ने बैठ के माइन करना हो, तो आम लोग कैसे यूज करेंगे? ये तो एक क्लब बना हुआ है बस. ये तो एक उस तरह की चीज है कि बस किसी बंदे को ही आता होगा तो वही कर सकता है. मेजोरिटी तो दुनिया जो 7 बिलियन लोग हैं, उनमें से तो मेरे ख्याल में 0.1% भी इतने टेक्निकली साउंड नहीं होंगे. तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये था कि यार, वो कैसे मैसेज को मिल सकती है. जो लोकल करेंसी है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल में हम जो रखते हैं, आप टैप करें या वो करें, मतलब दैट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ अस. तो व्हाट इज द इंसेंटिव बिहाइंड इट? तो मुझे खैर समझ नहीं है. प्रॉब्ली आई एम जस्ट बीइंग एक्सट्रीमली नाइव हियर, सो डोंट डोंट जज मी ऑन दिस. लेकिन मेरा मेरा अपना अंदाजा ये है कि अगर तो ये एक ऐसी चीज है, जस्ट लाइक ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज, अगर स्टेक होल्डर्स ने डिमांड की तो nobody can stop it. Nobody can stop it. मैं भी नहीं स्टॉप कर सकूंगा. अगर मुझे कल को इसे अडेप्ट करना पड़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी इसकी पेनिट्रेशन हो जाएगी. लेकिन इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं, इस प्रोडक्ट के बारे में. So Alize, you can ask a question now. Or I Yeah, think my Amber, Said, or Alize, one of you were here before. I don't know, was it Amber or whoever was here first? Please speak. it's okay, she can go first. Okay, all right. Thank you. First of all, sorry for my voice. I have a sore throat. It's So not my you. question, my question regarding stakeholder management, I have two questions. The first one is कि अगर हमारे पास different stakeholders हैं जो कि equally important हैं, या जिनका हमें लगता है कि they have an equal impact on what you are doing, so how do you handle conflict in that situation? क्योंकि I think the major thing is to basically carry everybody together. अगर कहीं पे what I've seen is कि
this is where it hinders as well. अगर आपको आगे जाना है तो you need to be very tactful in that. And the other one is, which I realized, I did a project for somebody jahan pe I was handling the stakeholder management thing and I had to make everything. But what I understood was that honesty was not maintained. And I don't understand. There were so many things that were happening, which I think, and this is my question in terms of how much is it important to be honest with all of your stakeholders? How much information you should be sharing? And I think yahin pe conflict bhi aa jata hai, so the both questions are interlinked. I hope it makes sense. I don't Oh, know. it makes a lot of sense to me. I think this is a very important point. इसको हम अपनी language में कहते हैं trust issues. Stakeholder theory, अगर आप उसको एक building समझे ना, तो foundation is trust. तो उसके बगैर वो building खड़ी नहीं हो सकती. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक यू रेज इट वेरी वेल के आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इससे सफ़र भी करती हैं. नॉट सो मच इन यूरोप. यूरोप में कुछ सिस्टम्स भी ऐसे हैं, कुछ कल्चर भी ऐसा है ऑर्गेनाइजेशंस का कि मेजॉरिटी वहाँ पे, मैं आई एम जस्ट जनरलाइजिंग हियर, मैं आई डोंट नो, मे बी आई शुड नॉट डू दैट, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स हमने देखा है कि जो रिसर्च हमें बताती है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे स्टेक होल्डर ओरिएंटेड होती हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड ये होती है कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. तो ट्रस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, जहाँ तक आपकी बात है कि कितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे और ट्रेड ऑफ्स आएंगे, तो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय ट्रेड ऑफ्स. डेफिनेटली आएंगे. ये हो ही नहीं सकता कि आप जैसे फॉर एग्जांपल इसी कोविड की सिचुएशन में आप देख लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ले ऑफ करने पड़ गए लोग. अब वो कह रहे हैं कि मैं आई एम नॉट मेकिंग एनी रेवेन्यूज, मैं नहीं सस्टेन कर सकता, तो आई हैव टू लेट देम गो. तो वहां पे देखें ना, एक एक पूरे स्टेक होल्डर ग्रुप के साथ एम्प्लॉयज जो हैं उनके साथ वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है रादर देन वैल्यू क्रिएशन. तो आ गया ना मसला, ट्रेड ऑफ्स आ गए ना. तो अब आपने उसको कैसे डील करना है. अब ये अगर क्वेश्चन होगा ना, तो स्टेक होल्डर थ्योरी उसको ऐसे बताती है, वो कहेगी कि ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव. देयर आर क्रिएटिव वेज. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा. देखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. स्टेक होल्डर थ्योरी यही कहती है कि व्हेन यू आर स्टक, डू द राइट थिंग. एंड द राइट थिंग इज कि जो आपके पास जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज एंड सब कुछ है, उसके अंदर रहते हुए ट्राई टू क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी कंपनीज हैं, मैं जानता हूँ कनाडा में, जो फर्लो पे चले गए, जिनके जो एम्प्लॉयज थे. कुछ लोगों को उन्होंने कुछ ऐसी डील्स दे दी कि यार हम बस 2-3 महीने के लिए आपको ले ऑफ करें, उसके बाद जैसे ही हालात ठीक होंगे हम आपको वापस ले आएंगे. और उस दौरान में आप ये गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, आप इनको यूज करें. तो देयर आर वेज, राइट. अब ये एक सिर्फ एग्जाम्पल. अब आप एनवायरमेंट साइड पर आ जाएं. एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. केक कप्स पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन क्यूरेक कप्स किसी ने सुना है? वो जो कॉफी पॉड्स होते हैं, कॉफी मशीन के अंदर डालते हैं और वो पर्कुलेट करके आपको निकाल देती है. पर्कुलेट नहीं, बल्कि इनफैक्ट वो पर्कुलेटेड होती है, तो वो फॉरन इंस्टेंट कॉफी आपकी बन जाती है. तो वो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है इधर यूएस और नॉर्थ अमेरिका, इनफैक्ट यूरोप वगैरह में भी. So the owner of that company, the co-founder of that company, back in 2016, I think he apologized to the world. There's a very famous article जिसमें उसने आगे कहा था, I'm very sorry that I even created this business. और वो multi-billion-dollar business है, छोटा मोटा नहीं था. Why did he say that? Simple, because it was not biodegradable. वो landfill बस भरे जा रहे थे और आपके environment की तबाही कर रहे थे. तो कुछ सिविल सोसाइटीज, या आप समझ लें कुछ ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इन्होंने कैंपेन शुरू कर दी. एक कैंपेन बड़ी फेमस हुई, इसका नाम था किल द के कप्स. तो के एज इन क्यूरिक और किल द के. अब अगर आप अभी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी वो पूरी कैंपेन. तो उससे क्या हुआ, उन पे प्रेशर पड़ा. उन्होंने एक चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर हायर करना पड़ा उन्हें, और उसका काम ये था कि उसको किसी तरह बायोडिग्रेडेबल बनाएं. दे हैड टू लाइक स्पेंड मिलियंस, मल्टी-million dollar इन्वेस्टमेंट in rectifying this mistake. अब आप इसकी बैकग्राउंड में जाए ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि हमने इन द फर्स्ट प्लेस अपना प्रोडक्ट बनाए एनवायरनमेंट के लिए था. कितनी आयरॉनिक बात है कि जो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को हेल्प करने के लिए बनाया था, वही प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो गया. तो इसका मतलब है उन्होंने वो सही स्ट्रेटेजिकली अलाइन नहीं किया था अपना इंटरेस्ट विद द स्टेक होल्डर्स. और कैसे एनवायरनमेंट के लिए बनाया था, वो को फाउंडर कहता है कि
मैं चाहता था कि जो लोग इस वक्त, अब यहाँ पे कॉफी कल्चर है बहुत ज्यादा नॉर्थ अमेरिका में, अब आपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपने कॉफी पीनी है, तो आप क्या करते थे, ब्रेक्स लेते थे, आप जाते थे जी आई एम गोना ड्राइव टू टिम हॉर्टन्स और आई एम गोना गो टू स्टारबक्स, और आप अपने सारे को वर्कर्स का भी पूछ लेते थे यार आपने कौन सी पीनी है मैं ले आऊंगा वगैरह, तो रोज ऐसे कोई ना कोई कर देता था। यहाँ पे काफी कल्चर है इस चीज का। तो कहते हैं यार आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू स्टॉप देम टू ड्राइव देयर कार, कार्बन फुटप्रिंट छोड़े, टाइम बचाएं उनका, और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम आएगा इस कॉफी से, और एक अच्छी डिसेंट रीजनेबल कॉफी उनको अपनी ऑफिस स्पेस पे फ्रेश कॉफी मिल जाएगी। तो ये उसकी मोटिवेशन थी, बड़ी अच्छी मोटिवेशन थी। लेकिन देखो उसने क्या एक इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया कि वो जो पॉड्स बनाए वो ऐसा प्लास्टिक मटेरियल था कि बायोडिग्रेडेबल ही नहीं था। और दूसरा वो उसको आज तक नहीं, कैन यू बिलीव इट, इट्स 2021 एंड नोबडी हैज स्टिल फिगर्ड इट आउट कि वो कैसे यूज करना है। मुझे मेरी बेगम ने ना तोहफा दिया, वो बड़ी कुछ $400-450 की मशीन थी नेस्प्रेसो की, जिसके अंदर पॉड्स लगते थे। मैंने कहा मैं ये ले तो लूंगा लेकिन यार इसको मेंटेन तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने फौरन जाके वापस कर दी, मैंने कहा यार इसकी जगह मुझे कुछ और दे देना, मुझे मुझे पैसे दे दो, वो ज्यादा मुझे पसंद आएंगे, तो मैं अपने को गिटार का कोई इंस्ट्रूमेंट कोई चीज ले लूंगा ऐसी जो मुझे पसंद है। तो कहने का मकसद ये है कि वो बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो अभी तक नहीं उस पर यूटिलाइज हो सकी। वो क्या कहते हैं कि जी आपने अंदर से लाइनर उसका निकालना है, फिर आपने जाके ब्लू बिन में फेंकना है, फिर वो यार कौन करेगा ये सब कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू लाइक वेरी केयरफुली ड्राफ्ट योर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सप्लायर्स। अब पाकिस्तान में आप देख लें यार, इतना बुरा हाल है। जब मैं पाकिस्तान में, मैंने 1.5 साल काम किया था, although I was in a very good industry, मैं IT इंडस्ट्री में काम किया था, और मेरे जो बॉस थे वो he was a professor from लम्स, तो मुझे तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैंने जो सुना है अपने रिश्तेदारों से, मेरा भाई भी वहाँ पे ही इज अ प्रोफेशनल, कब से काम कर रहा है, तो यार बुरा हाल है सप्लायर्स का। लाइक नोबडी टेक्स केयर ऑफ देयर सप्लायर्स, लाइक उनकी पेमेंट्स ही नहीं करते लोग। सबसे ज्यादा जो पीछे जिसको रखा हुआ है ना वो सप्लायर्स है। अब मुझे बताओ ऐसे इन्वायरमेंट में कैसे बिजनेस अच्छा हो सकता है। सप्लायर जैसे ही बुरा वक्त आएगा सप्लायर तो भाग जाएगा, वो कहेगा यार मैं आपके लिए, आपने मेरे लिए नहीं कभी कुछ किया तो मैं आपके लिए क्यों करूं, रेसिप्रोसिटी खत्म हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू आर नॉट अलाइनिंग योर इंटरेस्ट विद ऑल दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स on the principle of fairness and trust, you're going to lose. So I hope that answers your question, Amber. Good question. So Alize, you're next. Yeah, thank you. So I wanted to ask if the there's these businesses which are constantly forming strategic alliances on not a daily basis but very rigorously. They have a very future forward approach when it comes to having strategic alliances with all sorts of stakeholders. Like they do their alliances with environment and every different thing, whatever benefits them. Is that one main solution to making the most out of the stakeholder theory? It's one of the ways. Benefiting all the stakeholders at the most you can. I would say it's one of the ways. And if you think that they're aligning their interest by going into some sort of a joint venture or by collaborating with them, absolutely. I mean, there's no harm in that. Example I can give you is that there's this concept in strategic management that let the people who are experts in certain field do the job. For example, I'm not an expert in logistics. So why would I go and venture out spending millions of dollars in building my own logistical company? I don't have to. I can just go and partner with DHL or FedEx or in Pakistan, TCS, for example, or any other. So absolutely, I mean, joint ventures, collaborations, they help. But how they help, that's more important. If you are at a stage where you have just crazy amount of power, and you can just make or break any other stakeholder by collaborating with them, that's also not fair. Example I can give you is Walmart. So Walmart, when they go and venture out with a smaller company or maybe a startup, you can just imagine that the startup is just going to be at a receiving end. They're not going to be at a giving end, right? So that's unfair in most cases. One case that happened a couple of years ago in Canada, there was a fight between Visa and Walmart. Now, both of these companies are extremely big companies, and what they were fighting about was their rates. I think Visa was asking Walmart not to
thrash their rates or commission rates. I think वो 2% या 3% ट्रांजेक्शन पे उनको मिलता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. तो वॉलमार्ट ने इसके प्रोटेस्ट में कहा कि हमने वीजा के कार्ड्स ही नहीं यूज करवाने पाकिस्तान यहाँ कनाडा में. तो हम ना मास्टर कार्ड, अब मैं वीजा का मैंने कहा यार ये दिस इज सो इनकन्वीनियंट. इसका क्या मतलब है? इफ आई गो एंड शॉप एट वॉलमार्ट, I need to either carry cash, which I don't do it, or I have to go for a MasterCard, which I don't have right now. I'm more comfortable with Visa. और मेरे सारे products उनके साथ हैं, तो like मेरे लिए problem है ये कि मैं एक और कार्ड बनवाऊं. तो उसके ऊपर लोगों ने काफी कंसर्न रेज किया, बट बहरहाल इन्होंने कर दिया. और किया भी कैसे कि दे जस्ट वेंट टू द नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस और वहां से उन्होंने रोल आउट करना शुरू किया जहाँ पॉपुलेशन कम थी. जब आउटक्राई आना शुरू हुआ, both leaders had to sit down and they had to come up with some solution. और दोनों ही बड़े stubborn थे. तो उससे हुआ ये कि एंड पे दोनों ने ना अपनी विन विन सिचुएशन निकाल ली किसी तरीके से, और कहा कि अच्छा हम रेट भी कम नहीं कर रहे, और उससे कहा कि हम देखें आपके कस्टमर्स की बात सुन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव काइंड ऑफ लेट गो ऑफ दिस इशू. कहने का मकसद ये दो बिग ऑर्गेनाइजेशंस थी, यू कैन डू इट देयर, बट नाउ थिंक वॉलमार्ट and Umair Shah, who just started selling candles, for example, और एक स्टार्टअप हूँ, वॉलमार्ट तो मुझे कच्चा खा जाएगा. तो वो कहेगा यार आप नहीं तो मेरे पास 10,000 और सप्लायर्स हैं, मैं किसी और से ले लूंगा. तो फिर आप एज अ कस्टमर क्या करेंगे, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है, लेजिटिमेसी है, इतना उसके पास वॉल्यूम है कि आप फॉरेन रेट्स भी थ्रैश करेंगे, आप शायद थोड़ा बहुत नुकसान भी ले लें कि यार मेरा ब्रांड बन जाए, मेरा ये हो जाए. तो यहाँ पे फिर आके ना रेसिप्रोसिटी बड़ी अहम होती है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी ना, यू आर गोना स्टे लॉयल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन. एक्सप्लॉइटेशन खराब करती है. तो आई एम अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि स्टेक होल्डर थियरी, इट्स अ बिजनेस एथिक्स थियरी. ये एक एथिकल थियरी है, और ये बेसिकली करती है कि यार ऑर्गेनाइजेशंस एंड एथिक्स दे आर नॉट सेपरेटेड. How Ed Freeman explains it, he uses the term separation fallacy. He said, just get rid of this separation fallacy. Without business, ethics cannot be there. And without ethics, business cannot be there. ये दोनों ऐसे हैं कि जैसे ग्लव के अंदर आपका हाथ हो, या आप इस तरह इकट्ठे मिलके काम करो, वरना you're going to be at a losing end. एक और बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है इस डिसिप्लिन में, वो है बिजनेस एथिक्स. अब अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन वो कहते हैं ये ऑक्सीमोरॉन्स हैं. मतलब अगर बिजनेस एक है और एथिक्स है, तो बेसिकली आप दो ऑपोजिट बता रहे हो. ओके, आई एम गोना टीच यू एथिक्स बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस. सो प्रोबेबली माय अजम्पशन इज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. आप कुछ गलत कर रहे हो बिजनेस, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई आई हैव टू टीच यू बिजनेस एथिक्स. तो यहाँ पे कंसर्न जो हम रेज करते हैं बिजनेस स्कूल्स में, वो है ये कि somehow we really need to guide our next generation. And trust me, the next generation, by the way, मैं अपने आप को उसी में समझता हूँ कि वो थोड़ी सी ना ethics oriented है, वो demand करती है ethics. It's not like कि आप बस मिट्टी पाओ, not at all. Majority of the times in business environment, this new generation demands ethical environments. जहाँ पे आप सारी movements भी देखें, एक जिसे कहते हैं ना rise हुआ इन चीज़ों का, awareness ज़्यादा आई है सोशल मीडिया के थ्रू. ठीक है, उसके इल्स भी हैं, लेकिन एक लेजिटिमेसी मिली है जिसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स ऊपर आई हैं और आप एथिक्स को डिमांड करना शुरू. अब आप देखें ना, कोई एक कंपनी छोटा सा इधर उधर होती है, जरा सा इधर उधर होती है, क्या हाल कर देते हैं लोग उसका. ऐसी मूवमेंट्स आ जाती हैं कि 2-3 दिन के अंदर उन्हें अपोलोजाइज, उन्हें फायर करना पड़ता है लोगों को जिन्होंने वो मिस्टेक्स की होती हैं. वो भी एक बड़ा एक्सट्रीम वैसे आउटकम है, लेकिन इवेंचुअली we are going towards a point जहाँ पे जाके चीजें processes थोड़े fair हो जाएंगे. तो I hope that answers your question, Elise. Yes, definitely answers very well. Thank you. Perfect. So I think Sarmad, you were here first. You can go next. Yeah. So your lecture on stakeholder theory was quite interesting, but I just want to go to some, this age-old basic sort of a debate. I hope that's okay. So most of us are in our final year, and we're looking forward to going in a starting our jobs one on one place or another. So what is the debate of entrepreneurship, since you were discussing that, versus sort of this corporate slavery as people call it? Now obviously people do some pros and cons to it. There in an entrepreneurial venture, you might eventually gain more value as opposed to getting on a salary based job
for the next decade. But at the same time, it has a lot of, you have to go through a lot of struggle, and there's no security, there's no certainty that probably an MNC or any salaried company that established company that can give you. So how, in your opinion, how do you take this? What is just your opinion on it? How do you take this debate? या मेरी ओपिनियन तो प्रॉबली वही होगी जो एक कॉमन सेंस होगी, वो ये कि यार फर्स्ट गो फॉर द थिंग्स दैट विल बी मच मोर रेलेवेंट टू योर सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लो और फिर साथ साथ वेंचर आउट करो और छोटे स्केल पे करो, फिर उसको बड़े स्केल पे लेके जाओ. जब इतना हो जाए फिर अपनी रेगुलर जॉब छोड़ दो. तो ये तो एक, जैसे कहते हैं ना कि आप कितना लॉस एब्जॉर्ब कर सकते हो उसकी बेसिस पे है. तो दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इफ यू रियली बिलीव इन दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस दैट यू थिंक इट वुड जस्ट रन ऑफ और अच्छा चल जाएगा, तो अगेन आपने सिचुएशन को देख के उसके ऊपर असेसमेंट करनी होती है. इस पर कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर है नहीं मेरे ख्याल में. आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिन्होंने बिल्कुल इसका ऑपोजिट किया एंड इट वर्क फॉर देम. बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल मिलेगी कि जिन्होंने बिल्कुल ये किया एंड इट वर्क फॉर देम. तो आई थिंक आपने अपना आपको देखना होता है. मैं तो ऐसे ही करता हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं अपने साइड पे वेंचर्स करता रहता हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बिजनेस ही शुरू करो. आप साइड पे कंसल्टिंग कर सकते हो, आप साइड पे, और मतलब एक आपको स्टोर होना, फिजिकल स्टोर होना जरूरी थोड़ी है. You can learn skills as well. राइट. तो आप अपने स्किल्स यूज कर सकते हो, आप अपना टाइम कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ा सकते हो. देयर सो मच दैट यू कैन, वो सब एंटरप्रेन्योरशिप में ही आता है. तो बेसिकली आई डोंट नो, आई थिंक डॉक्टर कुरैशी और जो लोग इस फील्ड में ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, उनके पास ज्यादा और थियरीज होंगी इसको सेकंड करने के लिए. जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि यार आप अपने आप को देख के स्केल करो. हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है. कुछ ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, कुछ बहुत कम रिस्क ले सकते हैं, कुछ बिल्कुल ही रिस्क के लेने के हालत में नहीं होते. लेकिन ये आई थिंक ये फियर के साथ ही आपने खेलना होता है थोड़ा सा. वो कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ, आपने वो भी करना होता है कि थोड़ा बहुत आप रिस्क लेके देखो तो सही, लेकिन उतना लो जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो. Fair enough. Thank you. All right, Rizwan, you want to ask a question? Yes. So you've talked about, sir, you talked about ethics and business. You know, they go into hand, and especially you've mentioned that people are concerned about sustainability and environmental concerns. But my question is that if we compare the situations from the Pakistan and the West world, basically, so they are two. These two are obviously on opposite ends. So the audience here is not so much into sustainability, and I'm not saying by this, but from thin air. So one of my marketing courses, we had an assignment where we were comparing. We had to market a business in Pakistan and that same business in US. So we took some data from Euromonitor. Obviously, it was research-based data. So the consumers are actually in US. The in apparel category are demanding sustainability. So they are more buying sustainable clothing. But such concept doesn't exist in Pakistan as of yet. So my concern is how do you, and if we go a bit deep into that, so when you have within the same locality, if you have these multiple audiences, so one of them is concerned about sustainability and all the ethical approaches, but others are not. And in Pakistan, masses are not. So the master's audience is not into that. So are you going to compromise and here investing into the and that could be my perspective. It could be wrong. The investing into sustainable approaches, ethical business practices might be less profitable in a sense. So are you going to compromise? How do you decide whether to compromise on profitability or to look at the future that audience will mature by itself? आई थिंक वेरी वेरी अप्लाइड क्वेश्चन. मेरे ख्याल में इस पे यार अप्रोच फिर वही आएगी कि अगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है पाकिस्तान में, आपने देखा होगा बिजनेसेस थोड़े प्रोसेसेस को बेहतर कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करता है. अब आप अपैरल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, तो जो मेरी रीडिंग है इसके बारे में, अगर किसी ने भी एक्सपोर्ट करना है ना, तो दे नीड टू हैव ISO सर्टिफिकेशंस, और वो सर्टिफिकेशन उनके पास होती हैं जस्ट टू मीट द
क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी. अब जैसे ISO 14000 एक सर्टिफिकेट है, वो है ही सिर्फ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे. तो a lot of these organizations in the West now they demand कि आपके पास वो सारी सर्टिफिकेशंस हो, अदरवाइज इनकी अपनी बड़ी दुर्गत बचती है यहाँ पे. अगर कुछ ऐसा वाकया हो जाए, फॉर एग्जांपल 2016 में, और शायद नहीं सॉरी 2013 में बांग्लादेश में हुआ था. आपको याद होगा एक पूरी फैक्ट्री गिर गई थी गैप की, और बहुत लोग उसमें फौत हुए थे, और एक बड़ा आउटक्राई आया था कि उधर की कंडीशंस देखें, और देखें गैप कितना बड़ा ब्रांड है, और उन्होंने एक ऐसी कंडीशन में लोगों से काम करवा रहे थे. बेशक वो उनकी सब्सिडरी थी, बेशक वो उनके डायरेक्टली अंडर नहीं थे, लेकिन एक आउटक्राई हुआ, जिसके बाद से ये नाइकी का वो चाइल्ड लेबर वाला केस कितना मतलब पॉपुलर हुआ है, तो वो आज तक नहीं उससे निकल सके. तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी के साथ भी आप पार्टनर करते हो डेवलपिंग वर्ल्ड में, तो अब आप ये डिमांड करते हो कि आपके पास वही प्रोसेसेस हो. अब आई डोंट नो कितने वो असल में ऑन ग्राउंड होते हैं. ये भी एक कंसर्न है कि ऊपर से कागजात तो बन जाते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट तो है. लेकिन मेरा इससे बड़ा क्वेश्चन है, मेरा बल्कि क्वेश्चन क्या, मैं कहता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक रेज हो रही है. वो ये कि देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है ना, फेयरनेस बढ़ रही है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है. तो जैसे जैसे वो पाकिस्तान में ट्रिकल आउट यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी. यू ऑल हैव एन अपॉर्चुनिटी देयर. आप अभी से एथिक्स और इन चीजों के प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीजें बनाना शुरू कर दें, तो व्हेन द टाइम कम्स आप लोग सबसे आगे लाइन मरोगे. तो कहने का मकसद ये कि इट्स नेवर टू लेट. इनफैक्ट आप वो चीज करना शुरू कर दें. अब मैं बचपन से ना एक कहानी सुनता आया हूँ, आई डोंट नो आप में से कितनों ने सुनी होगी, कि वो एक गोरा था, वो आया एक पाकिस्तानी के साथ बैठा, तो उसने कहा यार मुझे ना दूध का ग्लास ला दो. तो उसने कहा कि सर यहाँ पे मैं, अच्छा चले पता करता हूँ. उसने होटल वालों को कहा यार दूध का बंदोबस्त करके दो, तो इसको ना डब्बे का दूध ला के देना, ये दूसरा दूध तो पी नहीं सकेगा. तो उसे डब्बे का दूध ला के दिया. उसने कहा नहीं नहीं ये वाला नहीं, मुझे फ्रेश मिल्क चाहिए. तो उसने कहा यहाँ पे तो फ्रेश मिल्क मिलता ही नहीं है, वो तो हद से ज्यादा मतलब वो है उसकी हालत कि आप नहीं पी सकेंगे. तो वो आगे से कहते हैं यार अजीब लोग हो, मैं अगर इस मुल्क में रहता ना तो मैं सबसे अमीर आदमी होता. तो लोगों ने कहा क्यों, कैसे आप? तो कहते यार मैं फ्रेश मिल्क बेचता, मेरे से अमीर सारे लोग फिर मेरे से लेते, अगर मैं सही ऑथेंटिक खालिस दूध बेच रहा होता तो क्यों ना कोई आता मेरे पास. अभी मैं बचपन से कहानी सुन रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये कहानी ही रह गई है. तो वो कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है कि जिसमें हर बंदा ये सोचे कि यार फिर मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही एथिकल चीज करके दिखा देता हूँ, मैं ही एक सप्लायर के साथ अच्छा बना के दिखा देता हूँ, शायद कल को मेरा ही अच्छा हो जाए सीन. तो कहने का मकसद ये कि स्टॉप कंपेयरिंग. आई एम अगेंस्ट दैट. मैं कहता हूँ कि यार ये कंपैरिजंस नहीं. देखिए पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कल्चर, हमारा इतना डिस्काउंट भी नहीं करना चाहिए. जो हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारे लोगों की स्ट्रेंथ्स हैं, वो शायद वेस्ट में नहीं है. तो जो जो यहाँ की स्ट्रेंथ्स है वो पाकिस्तान में नहीं है. तो कहने का मकसद ये है कि जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट, और आपको कि यार मैं अब गिवन ग्राउंड रियलिटीज में प्रैग्मेटिकली, अब नाउ अगेन द स्टेक होल्डर थियरी इज अ प्रैग्मेटिस्ट थियरी. इट्स नॉट अ फिलोसॉफिकल थियरी जो कि डियोंटोलॉजिकल हो या बहुत यूटिलिटेरियन उसकी सेंट्रिक हो. इट इज अ प्रैग्मेटिक थियरी. प्रैग्मेटिज्म स्टार्टेड इन द यूएस. ये एक अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म टर्म है, जो कहते हैं बड़ा उस पर प्राइड लेते हैं फिलोसोफर्स उसके. ये जॉन डूई वगैरह ने 1906 1907 में शुरू की थी पढ़ना और पढ़ाना. तो कहने का मकसद ये है कि ये एक प्रैग्मेटिक चीज है. आप देखें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें रहकर हाउ कैन यू डू योर बेस्ट, और कैसे आप इम्प्रूव, और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, ये एक रात में नहीं आ सकता. आई डोंट वांट टू साउंड कंट्रोवर्शियल हियर. आई नो कि पाकिस्तान में एक बड़ी पॉलिटिकल डिवाइड है, बल्कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में भी बड़ी है. तो लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे एक रात में चीजें नहीं कभी भी हो सकती, या मेरे ख्याल में चंद सालों में भी नहीं चीजें हो सकती. एक तो ये कि उसके पीछे भागना छोड़ दें कि यार एक दिन में हो जाएगा. हाँ कभी कभी होप के लिए जरूर आप नारा मारें, लेकिन आप कोशिश करें कि बस इसको कंटिन्यूसली आपने इम्प्रूव करना है. आज गलती हुई है, कल उसको डू द राइट थिंग, कल ही उसको पकड़ें और उसको ठीक करो. सके यार सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक होगी, मैं इसको ठीक करता हूँ. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर देन आई थिंक आई शुड फिनिश द कॉल. इट्स बीन well I'm fine with that, Asghar. I think I can stay here for another couple of minutes if that's okay. I don't have Yes, sir. 2 बजे बस एक है कमिटमेंट. Thank you, sir. तो ठीक है असगर, is it fine?
Yes, sir. You can continue if you want Yeah. for 5-10 minutes. ओके ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी देता हूँ. अभी हमने एक वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग. अभी रिसेंटली हम लोग का एक दूसरी जगह पे मूव करना है, तो मेरी वाइफ कुछ चीजें ना मार्केट प्लेस पे लगा रही, जो फेसबुक की मार्केट प्लेस होती है. तो हमने कहा फेंकने से बेहतर है यार, कोई कितने की भी बस ले ले, हमारे घर से आके ले जा, तो जान छुटे से. यहाँ पे एक तो डिस्पोज करना भी बड़ा मसला है. तो मैंने कहा कि चलो बेचते हैं. उसने एक चीज लगाई जो कि कुछ $20 की बिक गई. तो एक पेंटिंग थी. लो जी, हम वो देने के लिए गए, वो ले गई बंदी, अपने घर चली गई. थोड़ी देर बाद उसका मेरी वाइफ को मैसेज आया कि यार ये डायमेंशंस ना तुमने गलत दी हैं मुझे. ये तो इंचेस में मैं समझ रही थी, तुमने तो मुझे सेंटीमीटर्स वाली दे दी है. तो मेरी वाइफ ने फौरन चेक किया, उसे कहा यार शी इज एब्सोल्युटली राइट, मैंने तो इतनी बड़ा ब्लंडर मार दी है. तो मेरी वाइफ ने फौरन उसको मैसेज किया कि यार तुम जहां भी हो, we're gonna come back, we're gonna take the painting and give you your $20 back. अब we didn't have to, like, और ना we don't even care कि $20 क्या है यार, $2000 की एक छोटी सी चीज थी, मतलब हमने दे दी उन्हें, इसमें nobody cares. लेकिन it's about कि यहाँ पे कल्चर है कि आप नहीं ये कर सकते, किसी को नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते. हाँ, मिस्टेक थी, जेन्युइन मिस्टेक थी, और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना जरूरी था. अब यही यहाँ की हर ऑर्गेनाइजेशन करती है. मैं बेस्ट बाय से अभी मैंने फोन लिया, उधर भी यही प्रॉब्लम आई, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम थी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एक सेकंड में लोग रिटर्न करते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती यहाँ पे. तो पाकिस्तान में ये कल्चर आ जाएगा इवेंचुअली, और मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा आना शुरू है ई कॉमर्स की वजह से. जहाँ पे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स हैं वो करती हैं आपको कि हम रिटर्न कर देंगे वगैरह. तो मतलब आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट स्टेज. तो जल्दी से मैं और क्वेश्चंस ले लूं. whoever was here first can just open the mic. Sidika, maybe it was you, or I don't know if Muhammad was here first. Should I go? Yes, please go ahead. Okay, so I just wanted to ask you, कि like in Western countries and abroad, it's mostly seen कि customer value जो होती है वो बहुत ज़्यादा, like if you shop abroad तो आप return करना बहुत आसान होता है. You just go to the shop and you can return it easily. And that's one thing that when I travel I notice a lot. और मुझे बहुत ये होता है कि पाकिस्तान में they don't value their customers like this. You know, you can't go to a shop, they have this 15-day limit या एक week का limit, इसके बाद you can't return या सिर्फ exchange कर सकते हैं. So why do you think that there's this like lack of trust with customers, or Yeah. I don't know, what is it? Why is this कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा they don't value customers? देखिए, अगेन इट्स अ रेट्रिक. ये मैं ना बिहेवियरल साइड पे रिसर्च करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ इट इज अबाउट रेट्रिक, या मोस्ट ऑफ इट इज अबाउट योर साइकोलॉजिकल बायसेस. मैं अब आपको 10 एग्जांपल्स और बता दूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कनाडा में क्या क्या करती है. तो बहुत कुछ करती है, ठीक है, हमें पता है कि, और वो सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है. अगेन एज अ सोशल साइंटिस्ट मैं कहूँगा वो यहाँ के लोग भी करते हैं, कैनेडियंस भी करते हैं. बट क्या है कि एक बड़ा बैड नेम लग गया हुआ है पाकिस्तानियों के साथ या देसियों के साथ, कि हम कहेंगे यार ये इंडियन ही होगा, ये पाकिस्तानी होगा, या श्रीलंकन होगा, या इसी. अब ये बायसेस हैं, ये रेट्रिक बन गया हुआ है. अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ी स्टोरी होती थी पुराने ज़माने में. DSLR का आपको तो पता होगा, बड़ा एक कल्चर आया था पाकिस्तान में. तो मैं नया नया कनाडा आया, तो यहाँ पे मैंने देखा हर स्टोर पे एक DSLR है. इट वाज कॉस्टिंग अबाउट $1,000, 1,100, 1,500, इस तक काफ़ी महंगी चीज़ थी वो. तो मेरी शादी थी, मैं पाकिस्तान गया, तो आई किड यू नॉट, मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया, और उसने कहा कि यार तुम एक काम करो, ये DSLR यहाँ से खरीदो और ले जाओ, और एक ना मेमोरी कार्ड ले लेना, और तुम्हारी कितना महीने में वापस आ जाना, तुमने तस्वीरें खींच खूंच के सब कुछ करके वो मेमोरी कार्ड में अपनी तस्वीरें ट्रांसफर करना, और वापस आके वापस करवा देना. मेरे सारे दोस्तों ने ये किए. मैं उसकी शक्ल देखता रह गया थोड़ी देर के लिए. ऑनेस्टली आई किड यू नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बड़ा पायस आदमी है, कुछ नॉट एट ऑल. लाइक मैं 2 मिनट के लिए सोचने में पड़ गया कि यार लोग ये भी करते हैं. तो इट्स अबाउट, हाँ करते हैं, बिल्कुल हर जगह मिलेंगे. मेरे ख्याल में कैनेडियंस भी करते होंगे, क्योंकि सिस्टम है, कोई ना कोई इसमें लूप होल निकाल ही लेते हैं लोग. लेकिन क्या होता है उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है कितना कर लेंगे यार, कितना कर लेंगे. जिस वॉल्यूम पे वो लोग बेच रहे हैं, जिस वॉल्यूम पे कर रहे हैं, शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता. तो कहने का, हाँ go ahead. So who do you think is right? Like trust करना चाहिए customers को, and like they're stakeholders, right? So should you give them this benefit of doubt, or should you not go to this extent of compensating them and going the extra mile to take care of them?
इसमें यही है कि अगर एक बंदा बार बार एक्सप्लॉइट करे तो देन आप यू शुड हैव अ राइट टू बैन दैट पर्सन एज अ कस्टमर. एब्सोल्युटली. ये कहीं नहीं लिखा कि आप उनको खुली छूट दे दें कस्टमर्स को. हाँ, ट्रस्ट करना चाहिए. मेजॉरिटी केसेस में जेन्युइन केसेस होते हैं. लाइक मेरे केस में मैंने आज तक कभी भी गलत चीज नहीं रिटर्न की या गलत झूठ बोल के नहीं रिटर्न की. ये अब आपके ऊपर है या आपकी तरबियत पे. तो मैं कहता हूँ जस्ट मेरे ख्याल में कुछ कंपनीज ऐसे टेस्ट होनी चाहिए पाकिस्तान में भी, जो कि मेरे ख्याल में होना शुरू हो गई हैं, कि वो आपको ज्यादा तंग नहीं करते रिटर्न्स में. वो पूछते हैं अच्छा यार क्या प्रॉब्लम थी, हाँ ठीक है हम आपको रिटर्न कर देंगे. तो ये होता है, काफी अब होना शुरू है. और आप देखेंगे जब बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सबको करना पड़ जाएगा, वरना आप कंपेटिटिव नहीं रह सकेंगे. तो somebody has to start somewhere. आई थिंक होना शुरू हो रहा है. टाइम लगेगा, ट्रस्ट आएगा कस्टमर्स का, और कस्टमर्स को भी समझ आएगी कि यार आप नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते लोगों को. तो वैल्यू आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी वरना.